हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. आई एम योर मैथ्स टीचर अंजलि दैया. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मेजरमेंट. In this chapter you will learn about measurement of length, measurement of weight, measurement of capacity, fundamental operations on measurement. In the previous class we have studied that the basic units of measuring length, weight and capacity are meter, gram and liter respectively. In this class we will study more about the units of measurement. Now measurement of length. Meter is the basic unit of measuring length. The unit smaller than the basic unit are named by adding prefix deci, centi, milli and so on, while the units bigger than the basic unit are named by adding prefix deca, hecto, kilo and on before the basic units. Look at the table given below. यूनिट्स गिवन है, वैल्यूज गिवन है. ये हमारी बेसिक यूनिट है यहाँ पे 1 मीटर. उससे बिगर यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 10 डेकामीटर, 100 हेक्टोमीटर एंड 1000 किलोमीटर. और स्मॉलर यूनिट्स इधर है डिवाइडेड बाय 10. सो 1/10 इज डेसीमीटर, 1/100 is centimeter and 1/1000 is millimeter. From the above table, it is clear that each bigger unit is 10 times of its smaller unit and each smaller unit is 1/10 times of its bigger unit. So, we have 1 kilometer is equals to 1000 meter, 1 hectometer is equals to 100 meter, 1 decameter is equals to 10 meter. And 1 decimeter is equals to 1/10 meter, that is 0.1 meter. 1 centimeter is equals to 1/100 meter, that is 0.01 meter. 1 millimeter is equals to 1/1000 meter, that is 0.001 meter. Now example करते हैं इससे related. Convert the following into meters. A is 2.6 kilometer, B is 50 centimeter, C is 45 decimeter. Solution करते हैं. A part. 1 kilometer is equals to 1000 meter. So 2.6 kilometer is equals to 2.6 multiplied by 1000 meter is equals to 2600 meter. Now B part. 1 centimeter is equals to 1 upon 100 meter. So 50 centimeter is equals to 50 multiplied by 100, that is equals to 0.5 meter. C part. 1 decimeter is equals to 1 upon 10 meter. So 45 decimeter is equals to 45 multiplied by 1 upon 10 meter is equals to 4.5 meter. Keep in mind. For converting bigger units into smaller one, we multiply, and for converting smaller units into bigger one, we divide. Now next example, convert the following. A part, 6 kilometer, 2 meter, 7 centimeter into meters. Solution करते हैं. A part, 1 kilometer. We know that 1 kilometer is equals to 1000 meter and 1 centimeter is equals to 1 upon 100 meter. So 6 kilometer, 2 meter, 7 centimeter is equals to 6 kilometer को convert करेंगे हम 6 multiply by 1000 meter plus 2 meter already मीटर में है and 7 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में 7 multiply by 1 upon 100 meters. Now 6000 meter plus 2 meter plus 0.07 meter, that is equals to 6002.07 meter. Now B part, that is 2 meter, 50 centimeter and 2 millimeter into centimeter. So we know that 1 meter is equals to 100 centimeter and 1 millimeter is equals to 1 upon 10 centimeter. So 2 meter becomes 2 multiplied by 100 centimeter plus 50 centimeter already centimeter में है and 2 millimeter is equals to 2 multiplied by 1/10 centimeter. It becomes 200 centimeter plus 50 centimeter plus 0.2 centimeter is equals to 250.2 centimeter. तो बच्चों सेम मेथड को यूज करते हुए एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next is measurement of weight. Gram is the basic unit of measuring weight. The units smaller than the basic unit are named by adding prefix deci, centi, milli and so on, while the units bigger than the basic unit are named by adding prefix deca, hecto, kilo and so on before the basic unit. Look at the table given below. Units given है, values given है. Now gram आपकी क्या है? Basic units है. Basic unit से बड़ी है वो 10 से multiply हो रही है, that is 10 decagram, 100 hectogram and 1000 kilogram. और smaller units divide हो रही है 10 से, that is 1/10 decigram, 1/100 centigram and 1/1000 milligram.
From the above table, it is clear that each bigger unit is 10 times of its smaller units and each smaller unit is 1 by 10 times of its bigger unit. So, we have 1 kilogram is equals to 1000 gram, 1 hectogram is equals to 100 grams, 1 decagram is equals to 10 gram and 1 decigram is equals to 1 upon 10 gram, that is 0.1 gram. 1 centigram is equals to 1 upon 100 gram, that is 0.01 gram. 1 milligram is equals to 1 upon 1000 gram, that is 0.001 gram. Keep in mind, quintal and tons are two higher units of weights which are used frequently. 1 quintal is equals to 100 kilogram and 1 ton is equals to 1000 kilograms. Example करते हैं. Convert the following into grams. A part 7.2 gram, B is 16 decigram and 120 milligram. Solution करते हैं. A part, we know that 1 kilogram is equals to 1000 gram. So 7.2 kilogram is equals to 7.2 multiplied by 1000 is equals to 7200 grams. Now B part, 1 decigram is equals to 1 upon 10 gram. So 16 decigram is equals to 16 multiplied by 1 by 10 gram is equals to 1.6 gram. Now C part, 1 milligram is equals to 1 upon 1000 grams. So 120 milligram is equals to 120 multiplied by 1 upon 1000 gram is equals to 0.12 gram. Now next example, convert the following. A part is 3 hectogram 2 decagram into grams and B is 30 gram 50 milligram into centigram. Solution करते हैं इनके. A part, 1 hectogram is equals to 100 grams and 1 decagram is equals to 10 grams. So 3 hectogram and 2 decagram. 3 hectogram multiplied by 100 gram and 2 decagram multiplied by 10 grams. That is equals to 300 gram plus 20 gram is equals to 320 grams. Now B part, 1 gram is equals to 100 centigram and 1 milligram is equals to 1 upon 10 centigram. So 30 gram and 50 milligram is equals to 30 multiplied by 100, that becomes 3000 and 50 milligram multiplied by 1 upon 10 centigram, that is equals to 5 centigram. Total is 3005 centigrams. तो बच्चों सेम मेथड को यूज करते हुए एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next is measurement of capacity. Liter is the basic unit of measuring capacity. The units smaller than the basic unit are named by adding prefix deci, centi, milli and so on, while the units bigger than the basic units are named by adding prefix deca, hecto, kilo and so on before the basic units. Look at the table given below. Units दे रखी है यहाँ पे and values. तो हमारी basic unit है लीटर, तो bigger units की तरफ जाएंगे तो multiply by 10, that is 10 decaliter, 100 हेक्टोलीटर एंड 1000 लीटर्स. और स्मॉलर यूनिट्स की तरफ जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 1 बाय 10 डेसीलीटर, 1 बाय 100 सेंटीलीटर एंड 1 बाय 1000 इज मिलीलीटर. From the above table, it is clear that each bigger unit is 10 times of its smaller unit and each smaller unit is 1 by 10 times of its bigger unit. So, we have 1 kiloliter is equals to 1000 liter, 1 hectoliter is 100 liter, 1 decaliter is equals to 10 liter and 1 deciliter is 1 upon 10 liter, that is 0.1 liter. 1 centiliter is equals to 1 upon 100 liter, that is 0.01 liter and 1 milliliter is equals to 1 upon 1000 liter, that is 0.001 liter. Now example करते हैं. Convert the following into liters. A part 2.5 kiloliter. Solution करते हैं इसका. We know that 1 kiloliter is equals to 1000 liters. So 2.5 kiloliter is equals to 2.5 multiplied by 1000 liter is equals to 2500 liters. Now B part 50 deciliter. We know that 1 deciliter is equals to 1 upon 10 liters. So 50 deciliter is equals to 50 multiplied by 1 upon 10, that is equals to 5 liters. Now C part, 1 milliliter is equals to 1 upon 1000 liters. So 250 milliliter is equals to 250 multiplied by 1 upon 1000 liters is equals to 0.25 liters. Now next example, convert the following. A part 4 kiloliter, 3 hectoliter, 2 decaliter and 1 liter into liters. Solution करते हैं इसका. A part, we know that 1 kiloliter is equals to 1000 liter, 1 hectoliter is equals to 100 liters and 1 decaliter is equals to 10 liters.
So 4 kiloliter becomes 4 multiplied by 1000 liters and 3 hectoliter becomes 3 multiplied by 100 liters and 2 decaliter becomes 2 multiplied by 10 liters plus लीटर ऑलरेडी लीटर में है तो यहाँ पे 4000 लीटर प्लस 300 लीटर प्लस 20 लीटर प्लस 1 लीटर सबको प्लस किया दैट इज 4321 लीटर्स. नाउ बी पार्ट. We know that 1 hectoliter is equals to 100 liters and 1 deciliter is equals to 1 upon 10 liters. So 2.5 hectoliter becomes 2.5 multiplied by 100 liters and 2 liter already liters में है and 30 deciliter becomes 30 multiplied by 10 liter that is equals to 250 liter plus 2 liter plus 3 liter that is equals to 255 liters. तो बच्चों सेम मेथड को यूज करते हुए एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन मेजरमेंट. एग्जाम्पल करते हैं. मोहन कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर 275 मीटर इन द फर्स्ट आवर एंड 8 किलोमीटर 803 मीटर इन द सेकेंड आवर. What distance did he cover in 2 hours? दोनों घंटों में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया तो दोनों घंटों में जितना किया उसको ऐड कर देंगे. तो सॉल्यूशन करते हैं. डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट आवर इज 15 किलोमीटर 275 मीटर. डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड आवर इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर 803 मीटर. टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स इज इक्वल्स टू दोनों को हमने ऐड किलोमीटर को किलोमीटर के नीचे एंड मीटर को मीटर दैट इज 15 किलोमीटर 275 मीटर 18 किलोमीटर 803 मीटर दोनों को ऐड किया दैट इज 34 किलोमीटर 78 मीटर. सो ही कवर्ड 34 किलोमीटर 78 मीटर इन 2 आवर्स. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. 2 कंटेनर्स वेट्स 1980 gram and 2 kilogram 300 grams respectively. Which container is heavy and by how much? कौन सा heavy है? तो दोनों को हम पहले क्या करते हैं कंपेयर करते हैं सॉल्यूशन करते हैं इसका. वेट ऑफ फर्स्ट कंटेनर इज 1980 ग्राम. 1980 ग्राम का मतलब 1000 प्लस 980 ग्राम एंड 1000 ग्राम बिकम्स 1 किलोग्राम दैट इज 1 किलोग्राम 980 ग्राम्स एंड वेट ऑफ सेकेंड कंटेनर इज 2 किलोग्राम एंड 300 ग्राम्स. तो 2 किलोग्राम हैवी हुआ. सो 2 किलोग्राम 300 ग्राम इज ग्रेटर देन 1 किलोग्राम 980 ग्राम्स. बाय हाउ मच? हाउ मच करने के लिए क्या करेंगे हम हैवी वाले में से लाइट वाले को माइनस कर देंगे. तो अगेन किलोग्राम और ग्राम्स में कन्वर्ट किया और उनको माइनस करेंगे. सो सेकेंड कंटेनर इज मोर हैवी. दोनों का डिफरेंस निकाला 2 किलोग्राम 300 ग्राम माइनस 1 किलोग्राम 980 ग्राम्स. सो डिफरेंस कितना आया 320 ग्राम्स. यहां हमने किलोग्राम और ग्राम्स को माइनस किया. सो सेकेंड कंटेनर इज हैवी बाय 320 ग्राम्स. नेक्स्ट एग्जांपल. अ पैक ऑफ जूस वेट्स 7 किलोग्राम 325 ग्राम्स. व्हाट इज द वेट ऑफ 12 सच पैक्स इन किलोग्राम. सॉल्यूशन करते हैं इसका. एक पैक ऑफ जूस का वेट कितना है दैट इज 7 किलोग्राम 325 ग्राम्स दैट इज इक्वल्स टू 7.325 किलोग्राम. वेट ऑफ 12 पैक्स. ऐसे ही 12 पैक्स कितना वेट होगा ज्यादा होगा ऑब्वियसली. तो हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 12. तो हमने मल्टीप्लाई किया डेसिमल को हटा के नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 87900. डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया दैट इज 87.900 किलोग्राम. सो द वेट ऑफ 12 पैक्स ऑफ जूस इज 87.900 किलोग्राम. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. 7 liter 410 milliliter soup was made. It was equally distributed among 6 persons. How much soup was given to each person? तो डिवाइड किया है डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वी हैव टू डिवाइड. सॉल्यूशन करते हैं. टोटल क्वांटिटी ऑफ सूप इज 7 लीटर 410 मिलीलीटर दैट इज 7.410 लीटर्स. नंबर ऑफ पर्सन्स कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 में. सो क्वांटिटी ऑफ सूप गिवन टू ईच पर्सन इज 7.410 लीटर डिवाइडेड बाय 6. 6 से डिवाइड किया हमारा तो आया 1.235 लीटर्स. सो ईच पर्सन गॉट 1 लीटर 235 मिलीलीटर सूप. तो बच्चों सेम मेथड को यूज करते हुए एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसका रिवीजन आप खुद करेंगे.